A very good morning to all my dear students. I am a Professor Pallavi Dhole welcomes you all in this today's lecture of entrepreneurship development. This subject is basically included in your final year syllabus. So today in this lecture we are going to discuss what are the different syllabus content basically present in the entrepreneurship development subject. So it is a non-theory subjects. So as per the exam point of view, it is not very much important, but as practical point of view and as your entrepreneurship as you means as your future point of view, this subject is very important because it will help you to en- entrepreneur means as an entrepreneur means you will get the opportunity to in your future to be a entrepreneur or a good entrepreneur in your daily life. ओके सो आप आपके जो करियर में अगर आपको एंटरप्रेनर बनना है सो दैट टाइम दिस सब्जेक्ट विल हेल्प यू. ओके सो इन दिस सब्जेक्ट बेसिकली डिफरेंट जो आपको टास्क परफॉर्म करने के लिए बोली है या फिर असाइनमेंट जो भी कंप्लीट करने के लिए बोली है दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑन टाइम. तो जो भी मेरे लेक्चर्स वीकली होंगे तो उस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको जो गिवन असाइनमेंट्स होगी मीन्स बेसिकली इंक्लूडेड इन योर प्रैक्टिकल कंटेंट यू हैव टू सॉल्व एंड सबमिट टू मी. ओके सो लेट अस डिस्कस द syllabus content. What are the different syllabus content is basically present in the entrepreneurship development program. See, this is the final year subject that is entrepreneurship development. Okay, so basically the outcome of this courses are identify your entrepreneur threats. यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपका कोर्स आउटकम है दैट विल बी आइडेंटिफाई योर एंटरप्रेनर थ्रेड्स. देन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दैट सूट यू. use the support system to zero down to your business idea. Then develop comprehensive business plan and prepare plan to manage the enterprise effectively. So these are the basic out course outcomes which is designed for basically for this entrepreneurship development subjects. Okay, so in that we have to just मीन्स जो भी आपके आउटकम्स है वो हमें क्या करने हैं निकालने हैं थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट्स लर्निंग. ओके so move towards this is the teaching and examination scheme. Okay, see there is a no theory paper examination, only practical examination is there, that is end semester examination having 50 marks internal and progressive assessment 50 marks internal. Okay, so in the progressive assessment you have to submit the practicals or exercises which is mentioned in the syllabus. So these are the suggested practical list. Okay, submit your profile summary of successful entrepreneurship in indicating milestone achievements, undertakes SWOT analysis to arrive at your business idea of a product service. Okay, then these are the number of different practicals which is basically included in the entrepreneurship development subject. So there are total 21 practicals are there. So out of this we will take only just 10 to 15 practicals. Okay, those are important as per the exam point of view or practical point of view. Okay, then these are the some suggested list. You can go through it and learn these services or any other whatever the suggestions will be given by the teachers which is basically design the subjects. Okay, then see this is the theory component, actually the contents we have to learn. Okay, in that see first this is the first unit, entrepreneurship development concept and scope. What is the concept and the scope of this programming? Okay, किसके लिए
मीन्स क्या कंसेप्ट है, स्कोप क्या है आपके फ्यूचर में, आपको एंटरप्रेनर बनना है तो स्कोप क्या क्या रहेगा, दैट विल बी लर्न इन दिस सिलेबस ओनली. ओके, देन in the second unit, the entrepreneur opportunities and the selection process. In that, product service selection, process selection, market study procedures, getting information from concerned stakeholders such as the Maharashtra Centers for Entrepreneurship Development, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises. So lots of things will be included in the second syllabus. So you have going to learn the opportunities and the selection process in this second unit. Next, in the third unit, support system. Okay, in that, describe the support system required for the specific enterprises, will provide the government agencies for the specified product and services, which will help to provide by the non-government agencies for the specified products and services, compute the break-even point for the specified. Okay, so number of different things you have to learn in this third unit. So that is the categorization of the MSME, acceleratory industries, support system, government agencies. Okay, so there are so many agencies which is basically gives the entrepreneurship to the different peoples. Okay, मीन्स फ्रॉम दैट, मीन्स आपको क्या होगा कि जो भी कुछ अगर आपको लर्न करना है, सो फ्रॉम दैट दिस सपोर्ट सिस्टम और सम एजेंसीज विल प्रोवाइड द प्लानिंग फ्यूचर और द facilities. Support agencies for entrepreneurship guidance, training, registration, technical consultation, technology transfer, and quality control, marketing and finance. Okay, so that will also be marketing and finance. These are the very very important point as per the entrepreneurship consult. ओके, सो जैसे आपको पता है कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए मार्केटिंग और जो फाइनेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग योर बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपांड एंड विदाउट फाइनेंस यू कैन नॉट ग्रो योर बिजनेस. ओके, so break even point, return on investment and return on sales. Then in the fourth unit, the business plan preparations, how to prepare the business plan. So justify, explain the key elements for the given business plan with respect to their purpose and sizes. Okay, prepare the budgets for the given ventures, prepare the details of the given components of the given startup business plans. Okay, so there are different topics which is included under the fourth unit, that is sources of products or business feasibility study, ownership, capital, budgeting, matching, entrepreneur with the projects, feasibility reports preparation, and evaluation criteria, business plan preparation. Okay, in the fifth unit, you have to learn the managing enterprise. Okay, so unique selling propositions, identification, developing a marketing plan, then preparing strategies of handling business, policy making, negotiation and bargaining techniques, risk management, planning for calculating risk taking, initiation with the low cost projects, integration for futuristic planning, angel investors, ventures capitalist. These are the different things, that is the roles and the procedures. So these are the different things we have to learn in the managing enterprise. And the very द सजेस्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, आपको यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी है. सो डेवलप 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट, अटैच फोटोग्राफ्स. आपको यहाँ पे ये जो है ये स्टार्ट करना है. ओके, ये जो है डेवलप 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हाउस होल्ड वेस्ट, जो हाउस होल्ड वेस्ट रहता है उसको यूज़ करके आपको 2 प्रोडक्ट्स बनाने हैं. यू हैव टू सबमिट with the photograph. Download the product development and innovative films from the internet. Okay, then prepare a collage for threads of successful entrepreneur. Okay, then invite entrepreneur, industrial official, bankers for interaction. Identify your hobbies and interests and convert them into business idea. So these are the different 5 activities you have to be suggested like this. Okay, so यहाँ पर आपको जैसे बोला है, according to that you have to
prepare the different activities. तो कोई भी एक एक्टिविटी आपको सबमिट करना है, तो जैसे पॉसिबल होगा हम वैसे करेंगे आपके सिलेबस के अंदर. ओके, नेक्स्ट. So this is the again very important suggested micro project list. Choose any advertisement and analyze its good or bad points. Decide any product and analyze its goods and bad features. Select any product and prepare its cost sheets. So कोई भी एक जो प्रोजेक्ट है आपको ग्रुप में बनाना है, तो ग्रुप हम फॉर्म करेंगे, तो ग्रुप में आपको एक एक प्रोजेक्ट करके आपको सबमिट करना है. ओके, सो ये सभी के सभी जो पार्ट है वो आपके सिलेबस के अंदर आता है. सो यू हैव टू फॉलो दिस. आपको टाइम टू टाइम जो भी सबमिशंस बोला गया वो आपको करना है, बिकॉज इन दिस सब्जेक्ट नो थेरी विल बी मेंशन, no theory paper, only practicals is there. So practical, on the basis of practicals you have to get the knowledge of these subjects. Okay, so this is a very I again repeat that this is a very important subject as per the future point of view. So prepare प्रैक्टिकल शीट्स. तो जो भी आपको प्रैक्टिकल्स बोले गए हैं वो टाइम टू टाइम आपको कवर करने हैं. और इसका एक ही लेक्चर मैं लूँगी आपका थर्सडे को. जो आपका ट्यूसडे का लेक्चर है ईडीपी का, दैट विल बी कन्वर्टेड टू पीडब्ल्यूपी, मीन्स पाइथन के लिए यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि 3 लेक्चर में होता नहीं. सो जो मेरा सेकेंड लेक्चर है दैट विल बी एक्सटेंडेड, तो उसमें ही मैं वीडियो ज़्यादा डालूँगी और आपका वो ईडीपी में कन्वर्ट करूँगी. ओनली 1 लेक्चर सफिशिएंट फॉर दिस सब्जेक्ट्स. तो एक ही लेक्चर जो थर्सडे को रहता है उसमें ही हम लेंगे. ओके, सो अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ यू कैन आस्क वेन एवर द मीट विल बी अरेंज फॉर दिस सब्जेक्ट. सो जो भी आपको यहाँ पर ऑथर्स या बुक्स मेंशन किए हैं, तो कोई भी एक अगर बुक आपको मिलती है, अगर लाइब्रेरी में निकाल लीजिए और प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, so from the next lecture we are going to start the first unit, that is the entrepreneurship development concept and scope. So till then, thank you so much. Stay safe and stay healthy.